अस्सलाम वालेकुम साथियों, जो क्लिप्स हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं शादी या बर्बादी के, उसमें अम्मी ने भी बात की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मियाँ साहब ने भी कुछ ना कुछ अपने हिस्से की बात की. एक टॉक है जो इस वक्त हम एडिट कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि इससे पहले हम वो अपलोड कर दें या हम इसके बाद करें. लेकिन बहरहाल हम बहुत चाहते थे इस बारे के बेटी भी इस बारे बात करे, क्योंकि बेटी बिल्कुल एक और दुनिया की है. वो पाकिस्तान को नहीं एक तरह से जानती, ना उसने कभी ड्रामास देखे हैं, ना कभी मूवीज देखी हैं, ना वो इस तरह पाकिस्तानियों में रही है. तो एक तरह से एक ऐसा पाकिस्तानी है जो बिल्कुल एक गोरे की तरह का है. तो उसको वहाँ के हालात का, वहाँ के माहौल का कुछ नहीं पता है. लेकिन एक पाकिस्तानी घराने में, प्योर पाकिस्तानी घराने में उसका ब्रॉट अप है. और बहुत हद तक हम भी बदल चुके हैं अपनी सोच में, अपनी अप्रोच में. हम शायद वैसे नहीं रहे जैसे कि हम पाकिस्तान से निकले थे, जिस सोच के साथ निकले थे. या तो यह है कि हम ने सीख लिया जमाने में घूमते फिरते, कोशिश की कि हम एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकें. हमारा घर जो है ये मुख्तलिफ कल्चर्स का कॉम्बिनेशन है. इसमें हमारा दामाद है जो ऑस्ट्रेलियन है, और हम अपनी बेटी से पूछना चाहेंगे कि एक मैरिड लाइफ जो है उसकी नज़र में क्या है, क्या राइट्स हैं उसके, क्या हकूक व फ़राइज़ हैं इस रिलेशनशिप में उसकी नज़र में. आई थिंक कि मैरिज एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में. तो आपका जो लाइफ पार्टनर होता है या जो आप के लिए चुना जाता है या जो आप चुनते हैं अपना लाइफ पार्टनर, आपको ये देख के चूज़ करना चाहिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा, और आर दे गोइंग टू मेक योर लाइफ हार्डर और वर्स. तो बहुत रिलेशनशिप्स में ऐसे देखती हूँ, नॉट जस्ट इन लाइक पाकिस्तानीज लेकिन गोरों में भी, जहाँ उनको सक्सेस ही सक्सेस मिलता है उस रिलेशनशिप से, या उनको एक पॉइंट पे आके दे मेक द डिसीजन कि ये रिलेशनशिप इस लाइक है नहीं कि वो कंटिन्यू करें. तो एंड ऑफ द डे आई थिंक अगर आप अपने इमोशंस को ना आउट ऑफ हैंड जाने दें और आप लॉजिकली सोचें दूसरे के बारे में, तो आई थिंक इट वुड मेक योर लाइफ बेटर इन द लॉन्ग रन. क्या डिफरेंस है एक कपल में, पाकिस्तानी कपल में और एक गोरे कपल में? आई थिंक गोरे कपल में जब आप देखते हैं आपको बहुत खुशी दिखती है कि यू नो दे गेटिंग मैरिड. हालांकि सब यही कहते हैं कि यू नो शादी से पहले और शादी के बाद देयर लाइफ वाज एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि पहले ही साथ रह रहे होते हैं. they've already you know bought houses, they've got kids. A wedding is just something they experience for fun, I guess, yeah, so that they can have the paper ताकि वो अपना नाम बदल सकें. लेकिन एक देसी शादी में आपको I don't know, it's a little bit awkward at times जब आप किसी की शादी पे जाते हैं, because वो excitement नहीं आपको दिखती couples में. अब देसियों में तो love ही नहीं दिखता. देसियों में तो बिल्कुल ही आपको like you know एक आंटी एक कमरे में सो रही होती है, अंकल दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं, क्योंकि आंटी बच्चों के साथ सो रही होती हैं, अंकल अपना ताकि अपनी नींद पूरी कर सकें. And it's like and you go to their house and they don't even talk to each other. Like the only conversation is खाना खा लें जी, अच्छा, and that's it. और आप सोचते हैं कि is this like a wedding or is this just a job that they're both doing because they're made to just do that? तो यानी मोहब्बत मियाँ बीवी में दिखनी बिल्कुल चाहिए. नहीं दिखती. दिखनी चाहिए, I think दिखनी चाहिए. I think it's very important कि आप एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें. Marriage is not just you know two people who have been bound by a piece of paper and then एक खाना पकाए जा रहा है और दूसरा कमाए जा रहे हैं. That's the whole purpose of your life. That's not what marriage should be. Marriage should be कि एक इंसान जो आपके साथ, जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपका साथी हो. You know, you can talk to them about your problems. आप अपने इश्यूज शेयर कर सकते हैं, वो अपने शेयर कर सकते हैं. आप अपना दिन डिस्कस कर सकते हैं किसी और के साथ. They're supposed to be your friend, not just somebody that you're cooking and cleaning for all the time. साथी हो. Yeah, I think वो बहुत important है. I think कोई लोग इतने इमोशनल नहीं होते
लेकिन एंड ऑफ द डे यू डू नीड दैट वन पर्सन जहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ. तो आपकी जिंदगी का साथी जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप बातचीत कर सकें. तो वाकई ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है. ये हमें भी कहती है. बहुत बार इसने कहा कि ये जो मियाँ बीवी होते हैं, हम जब किसी आंटी या अंकल के घर जाते हैं तो उस कपल में मोहब्बत नहीं दिखती, उनमें वो अटैचमेंट नहीं दिखती. वो दोनों एक तरह से एक ड्यूटी दे रहे होते हैं. और ये बात शायद हम इतने आदी हो चुके हैं इस किस्म के कपल्स देखने के कि हम ये सोचते ही नहीं कि बच्चा जो है वो किस नज़र से देख रहा है, या दूसरे माशरे का या दूसरे कल्चर का इंसान जो है, जो कहीं और पला बढ़ा है, उसको वो चीज़ दिखाई दे रही है जो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम इतना आदी हो चुके हैं. तो वाकई हमारे यहाँ के मियाँ बीवी जो हैं वो अमूमन देखा गया है कि एक दूसरे के लिए बस एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं. उनमें एक मोहब्बत, उनमें एक अटैचमेंट दिखाई नहीं देती है. तो यहाँ पर जो अब्यूज़ है कि एक हस्बैंड है वो आपको हर वक्त एक प्रेशर में रखता है और पैसे नहीं देता, खर्चा नहीं देता, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, या बुरा भला कहता है, डिमांडिंग है, ऐसे हस्बैंड के साथ क्या सलूक होना चाहिए? ऐसा हस्बैंड नहीं होना चाहिए. अच्छा. ऐसे आदमी को हस्बैंड होने का हक नहीं है. They shouldn't be a husband. And if you are unfortunate enough कि आपको एक ऐसा husband मिल गया तो आप वहाँ से चली जाएं. Just leave. Just leave. Yeah, go. लेकिन I understand कि बहुत not just in Pakistan लेकिन in the Western world as well बहुत issues हैं. You can't just up and go. A lot of women बहुत लोग कहते हैं तो छोड़ क्यों नहीं देती, just leave, walk. When I am one of those people too. मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर आपका मियाँ आपको मारता है, why don't you just leave? लेकिन after talking to my husband about it, मैं भी अपने मियाँ साहब से यही पूछती हूँ कि why, if your husband is hitting you, why don't you just leave? तो मेरे मियाँ साहब हमेशा यही कहते हैं कि the main reason a lot of women don't leave is money. They have no money. They have nowhere to go. They have no one to turn to. They don't know about the services that are available to them. So, and a lot of these women, they're so used to it. और फिर बहुत औरतों को ये भी सुनने को मिलता है कि अगर वो अपनी फ्रेंड को बताती हैं कि मेरे मियाँ ने मुझ पे हाथ उठाया, उनकी फ्रेंड का रिस्पॉन्स या ये होता है तो तुमने भी तो कुछ किया होगा ऐसा, या आदमियों के हाथ उठ ही जाते हैं. And if somebody said that while I was in the room, I would be like, नहीं, आदमियों के हाथ ऐसे ही नहीं उठते. That's abuse, that's harassment, that's against the law. तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, आपको शायद पता नहीं है कि निकलना कैसे है, you have maybe no one to talk to, no one to turn to, लेकिन government की services available हैं. There's lots of services up here. I've just done a quick Google search and instantly it's come up with the government of Australia gives you $1,000 for leaving your husband. Yeah. No. As a crisis helpline. And basically I think it's a Commonwealth Bank. It gives you $1,000 to help you stand on your feet. आप बहुत सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं. If you just Google domestic violence Australia or any country you're in, like domestic violence Canada या domestic violence United States, there are plenty of services out there. You don't need a friend's help. You don't need to discuss it with anybody. अगर आप एक दिन, for example, your husband's been beating you for the last 10 years and you wake up one morning and you think that's enough, you can leave and you can walk away and you don't have to tell anybody about it. लेकिन women who stay in these relationships ये सोचती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा. आप ये भी सोचें कि आपके बच्चे जो हैं वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे अगर वो देखते हैं कि आपका मियाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता. What they're going to see is it's okay for a man to beat a woman because a woman is weak, she's helpless, she can't do anything about it,
and men can do whatever they want. ये बच्चे बड़े होके अपनी बीवियों को मारेंगे. You have 4 sons, all 4 of them are going to be abusive. चारों के चार. और आपने उस घर में रह के अपने मियाँ की मारपीट सह के एक दुनिया को फेवर नहीं किया. By allowing those children to see and think it's okay to do this. That's a big issue. आप अगर उस आदमी से दूर रहेंगी या अपने बच्चों को उस आदमी के साए से दूर रखेंगी, what you're essentially doing is telling your children that it's not okay to do this. It's not okay to hit a woman. It's not okay to be abusive. और कभी कभी एक साए का ना होना is much better than having a man in your life. वैसे पर्सनली हमने ये चीज़ देखी है कि अगर एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में बच्चे पल बढ़ रहे हों, बाप माँ को मारता हो, गालियाँ निकालता हो, बुरा भला कहता हो, उन बच्चों के लिए ना माँ रहती है ना बाप रहता है. अगर माँ बाप को छोड़ देती है तो हमने ये देखा है कि वो बच्चे माँ के होके रहते हैं. वो जिसकी तरफ भी उन्होंने होना है वो हो जाते हैं, लेकिन कम से कम उनके पास एक रह जाता है. अगर माँ बाप का निशाना बनती है, हर रोज पिटती है, हर रोज रोती धोती है, हर रोज उम्मीद रखती है कि कल का दिन आज से बेहतर होगा, तो उसकी जो तवज्जो है वो औलाद से हट जाती है. वो फिर औलाद जो है बेचारी, वो माँ बाप भी अपना लड़ लड़ के जिंदगी गुजारते रहते हैं, औलाद अकेली पड़ जाती है. अगर वो औरत किनारा कशी इख्तियार कर लेती है एक ऐसे आदमी से जो अब्यूसिव है, बुरा है या आवारा है, वो भी उस शर्त पे जबकि उसको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, तो किसी भी कानून में आप जिस लैंड पर हैं उसका लॉ जो कहता है आप उसके अंडर हैं. किसी भी ज़मीन पे जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें किसी भी ज़मीन पर किसी आदमी का किसी औरत पे हाथ उठाना अलाउड नहीं है, क्राइम है, उसकी एक सज़ा है. तो इस बात को समझें कि जिस ज़मीन पे आप रहते हैं उस पर आपके हकूक़ हैं. उस आदमी को भी चाहिए कि उस दिन से डरे ताकि वो हाथ ना उठाए और अपनी बीवी को मारे पीटे नहीं और गालियाँ ना निकाले. तो तुम्हारे ख्याल में औरत और आदमी बराबर हैं? I think उनमें comparison नहीं है. I think men are apples, women are oranges. We're put on this earth to do different things. लेकिन औरत आदमी से weaker नहीं है. किस लिहाज से weaker नहीं है? A woman can be just as smart as a man. A woman can work just as much as a man. Physical strength is not everything. आप हमेशा कहती हैं कि men physically ladies से ज़्यादा strong होते हैं. Just a FYI, ये domestic violence की hotline men के लिए भी available है. वो भी पिटते हैं बहुत बहुत. And men भी, आदमी भी बहुत abuse का शिकार होते हैं. It's not just women. A lot of women, बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है कि women use children to torture men. And it's devastating. And it's women, जो ladies समझती हैं कि ये एक joke है, या they make light of domestic violence, या समझती हैं कि अगर हमने ये कह दिया कि हमारा मियाँ हमें मारता है तो हमें ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, and we'll get pity and people will feel sorry for us. They are ruining it for every single woman out there जो सच बोलती है. क्योंकि ladies are already fighting a battle जहाँ victim shame उनको किया जाता है. कि अगर एक lady के साथ कुछ होता है, आगे से a lot of women का response यही होता है, तो तुमने भी तो कुछ किया होगा. Which is victim blaming, कि you asked for it kind of thing. तो अगर आप एक हैं ऐसी lady जो चाह रही हैं कि ज़रा extra attention लें और झूठ बोल के चाहती हैं कि अपने मियाँ की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल करें, don't do that. That's a terrible thing to do. तो तुम्हारा कहना ये है कि abusive relationship में नहीं रहना चाहिए? Absolutely not. If you have a way out, go. लेकिन when I say abusive relationship, मेरा ये मतलब है कि like
فزیکل ابیوز, ایموشنل ابیوز, گالی گلوچ کرنے والا. آئی ڈونٹ مین کہ میاں آپ کو کہہ رہے کہ صبح اٹھ کے انڈے آپ بنا دیں اور آپ سمجھ لیں کہ ہی از ہراسنگ می. That's not abuse, that's not harassment. اور اگر آپ I think کہ and another thing I've seen is جو یہ بچیاں جنہوں نے ساری زندگی دیکھا ان کی مائیں ان کے ابو کو پوج رہی ہیں اور خدا کا درجہ دیا ہوا ہے and dad can do no wrong, یہی گرلز اب بڑی ہو کے کہہ رہی ہیں فرسٹلی ہم نے شادی نہیں کرنی. اوکے, اگر ہم شادی کریں گے ہم پاکستانی سے شادی نہیں کریں گے. جسٹ ڈسکلائمر, میں ایسی نہیں تھی. میں نے گورے سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ مجھے پاکستانی برے لگتے ہیں. لیکن اوکے, سو اگر دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں اگر ہم شادی کریں گے ہم پاکستانی سے نہیں کریں گے. اگر ہم شادی کریں گے ہم پسند کر کے شادی کریں گے. I want to go on a few dates beforehand, get to know the guy, and then I'll think about it. یا وہ کہتی ہیں جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ کہتی ہیں میرا میاں چاہتا ہے کہ میں ہانڈی روٹی پکاؤں. میں نے ہانڈی روٹی نہیں کرنی, میں نے جا کے جاب کرنی ہے. سو all these reasons I think کہ تھوڑا تھوڑا آج کل نیور جنریشن کی جو گرلز ہیں ان کا بھی تھوڑا زیادہ ہی I think they've become very princessy, کہ marriage is a two-way street. اور دوسری ایکسٹریم پہ یہ ہے کہ بوائز سمجھ رہے ہیں کہ آج کی گرلز بھی وہی خدمت خاطریں کریں گی ان کی جو ان کی امی انہیں کی. اوکے, امی اٹھ کے 5 بجے میرے لیے انڈا بناتی تھیں. اوکے, آئی تھنک both parties need to be realistic. لیکن a wife should be happy to cook if her husband wants her to cook. Okay, within reason. I'm not saying کہ بہت ایکسٹریم ہونا چاہیے, لیکن آئی تھنک فلیکسیبلٹی شوڈ بی آن بوتھ سائڈس. اور میں یہ آج کل نہیں دیکھ رہی ان دا نیور جنریشن. دا گرلز آر لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوک بیکاز آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ, آئی ایم گونا گو اینڈ ورک, اینڈ دیٹس فائن. لیکن یہ باتیں شادی سے پہلے ہونی چاہیے. اگر آپ شادی کرنے لگے ہیں آپ یہ ڈسکس کریں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے پارٹنر سے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ نے کہاں ان کو رکھنا ہے. Where will you stay after marriage? Can the boy even afford to live away from the parents if that's what the girl wants? And I think you should even ask if the boy wants a big family or a little family. کیونکہ بہت girls میری a lot of Pakistani girls are like ہمیں ایک اور بچہ چاہیے لیکن ہمارا میاں کہتا ہے نہیں, and they have like 2 kids, and it's like how unfair is that? اور وہی ریلیشن شپس ہیں جو میں دیکھتی ہوں جہاں سارا گھر کا کام اور بچوں کو پالنا پوسنا ماں ہی کرتی ہے اور باپ کو بچے نہیں چاہیے. Yeah, and the dad doesn't want kids, and my response is the dad's doing nothing anyway. Why does he get a say in this? لیکن یہ تم سوچتی ہو نا, ہمارا کلچر جو ہے, جو پاکستانی معاشرہ ہے, وہ بہت اور طرح کا ہے بیٹا. But is that right? Just because it's culture, does that make it right? I think it's not right. Well, there you go. Culture, یہ چیزیں آپ کو چینز بن کے شیکل ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے. Your culture should not get in the way of progress. Your religion should not get in the way of progress. آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے ورنہ. کیسے؟ آپ کتنی دیر تک کلیش کریں گے اگر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اس کو اور بچے چاہیے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو اور بچے نہیں چاہیے, تو one has to suffer. Why does it have to be the woman? اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور آدمیوں کو ایکول پانی دی ہے, ایکول ہوا دی ہے, ایکول ہارٹ بیٹس دی ہیں. In no way has he differentiated what a woman gets, what a man gets. نہیں, لیکن عورت کو جھکنے والا ہونا چاہیے نا, عورت میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. Why? تبھی تو گھر بستا ہے. Why always a woman though? Because سب سے زیادہ وہ سفر کر جاتی ہے اگر گھر ٹوٹتا ہے, تو آدمی نہیں. How do you know? میں نے دیکھا ہے. آپ نے ساری زندگی کہا کہ اگر ایک عورت بن ٹھن کے پھر رہی ہوتی ہے اور اس کا میاں گندے کپڑوں میں پھر رہا ہے تو آپ بیگم کو برا جانتے ہیں نا. اگر ایک آدمی کو اچھی بیوی نہیں ملتی تو وہ آدمی سفر کرتا ہے نا.
اگر ایک آدمی جو ایک بہت اچھا انسان ہے اس کو ایک ایسی بیوی ملتی ہے جو برا بھلا کہنے والی تانا دینے والی ہے تو آدمی جھکتا ہے نا تاکہ اس کا گھر بسا رہے. نہیں میرا خیال نہیں جھکتا. آئی تھنک جھکتے ہیں. ہوں گے. There's a lot of men out there who would have to bow down. ہاں صحیح کہتی I think when it comes to children, I don't think men should have a say. I think شادی سے پہلے اگر آپ کوئی اس قسم کے ایشوز ہیں تو آپ پہلے ڈسکس کر لیں. Absolutely. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی بس یہی سوچا کہ ایک بچہ ہوگا اور سارا پیار اسی کو دوں گا, اور آپ ایک ایسی گرل یا لیڈی ہیں who wants like 15 kids, that's a problem from the start. You know, وہ جتنا مرضی ہینڈسم ہو, جتنا مرضی پیسے والا ہو, what are those two things going to do for you when you have that one child and all your friends are having more kids and you're living a life where you resent yourself for the choices that you've made and you resent your partner. شادی کرنے کے لیے لڑکی کو ایک آدمی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ He should be handsome. نہیں I don't think there's one particular thing جو دیکھنا چاہیے. I think education is important. Flexibility ہونی چاہیے, common sense ہونا چاہیے, لائف میں prospects ہونی چاہیے کہ in 10 years time آپ کہاں پہ ہونا چاہتے ہیں. I think that's very important. I think they should be a decent human being, like empathy ہونی چاہیے ان میں. I'm not going to say deen because all these things are covered by deen. یہ سب دین کا حصہ ہیں. Yeah. زندگی کے ہر پہلو You میں shouldn't have to specifically say کہ you know deen ہونا چاہیے, because people who are decent human beings and have a good outlook on life and are nice people اور دوسروں کا درد رکھنے والے ہوں, I think that's very important. میں looks کو اتنا اوپر نہیں رکھتی. Like I don't think looks are all that important. I know obviously for some کوئی لوگ بہت چاہتے ہیں کہ you know ان کے partners بہت خوبصورت ہوں اور حسین ہوں, and to me I think a degree is more important. but that's just me. Understanding بھی ہونی چاہیے. تو عورت کو پکانا چاہیے آدمی کے لیے. You should ask them beforehand کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں پکاؤں یا نہ پکاؤں. نہیں تو وہ بیوی لے کے کس لیے جائے گا اگر ہانڈی بھی نہیں پکانی تو؟ باتیں کرنے کے لیے. تم ذرا ڈیپ اینڈ میننگ فل کنورسیشنز ہوں. جی میاں صاحب آج آپ نے کیا کیا؟ سو بیبی سے پہلے I was studying full time. After I finished my studies I started working full time. تو اگر آپ ایک پروفیشنل لیڈی سے شادی کر رہے ہیں تو یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ وہ you know دیگیں پکا کے آپ کے لیے رکھے گی شام کو, I think that's very hard to find. Like I love to cook. مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے. I love it. اگر آپ کو ایسی مل جاتی ہیں girl then you're very lucky. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ وہ کام بھی کرے گی اور پکائی گوندے گی بھی, especially if she's working just as many hours as you, I think that's unfair. اور تمہاری جو بھابھی ہے وہ کیسی بیوی ہے؟ I think she's a good wife. I think she's a very good wife. She looks after my brother. کھانے پکانے کا رکھتی ہے, لائک اس کو پتا ہے کہ میرے بھائی کو کس قسم کی بریانی اچھی لگتی ہے تو وہ وہی بناتی ہے. پراٹھے بھی میرا بھائی جیسے پسند کرتا ہے ویسے بناتی ہے, اور یہاں تک کہ لائک میرے ہسبینڈ کے لیے بھی اگر وہ پاستا بناتی ہے, میرے ہسبینڈ کے لیے بھی وہ کھانا لائک پاستا الگ کر کے کم مرچوں والا ان کے لیے اسپیسیفکلی لائک بون لیس چکن ڈال کے پاستا میں بناتی ہے. اینڈ you know what more can you ask for in somebody جو اتنا caring ہو. میرے بیبی کو بہت اچھی طرح رکھتی ہے, like she treats her my baby like her own. اور جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے I think she's a really good wife.
I think she goes above and beyond where she can. اور اگر وہ کہیں یہاں کی لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ڈفرنس ہوتا؟ I don't know very many Australian born Pakistanis. میں اتنی کلوز نہیں ہوں ان کے ساتھ. میرے سارے دوست they're all Australians, like گورے Australians.